Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that your children will be fine. May Allah Almighty keeps you happy and healthy. Myself Tahir Muhyiddin Shah, teacher GMS Kachama, Cluster Milial, Zone Kralpura, and District Kupwara. Students, as you know that we are learning the lesson number 6, chapter 6 of 8th class General Science, and the name of the lesson is food production and management. As I have already told you, food production means production of food, how to produce the food, and management means intizam, how we manage the production of food. And we already read that man depends upon other plants and animals for their food, and 70% of the population directly or indirectly is involved in the agriculture. And we have also read that different types of food varieties are found in our region, that is JNK, and in India. Cereals, fiber crops, pulses, oil seeds, root crops, tuber crops, sugar crops. These are the different types of crops which are produced in JNK and which are produced in India, and some of them are produced in JNK, and they are very important. They play a very vital role in the day-to-day life of a human beings. Okay, and we also read that main crops which are produced in JNK are rice, wheat, maize, barley, jawar, bajra, pulses, sugarcane, oil seeds. Okay, and today we will read horticulture in Jammu and Kashmir. In this chapter, we will read the name of the different fruits which are produced in Jammu and Kashmir. देखो बच्चा, you know that जो state of JNK है, it is very famous for cultivation of different variety of fruits and flowers. Horticulture वो pot है agriculture का, that part of agriculture which deals with fruits and flowers. ठीक, horticulture is that part which deals with the fruits and flowers. Today we will read about the different fruits and flowers which are produced in Jammu and Kashmir region. Okay, among fruits, apple is one of the most important fruit which is produced in the JNK. Apples, सेब जिनको कहते हैं, pears, नाशपाती, चेरी, शाहीदाना, plums, बेरी जिसको कहते हैं, इसके अलावा पोमग्रेनेट, अनानार, पीच, आड़ू, है ना, एप्रिकॉट, खुबानी, वॉलनट्स, अखरोट, आलमंड्स, बादाम, ये ग्रो होते हैं किस में? कश्मीर में. दीज आर द इम्पोर्टेंट फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर रीजन. समझ आया? आर यू गेटिंग मी? कश्मीर की एप्पल्स की हम बात करें, ये बहुत मशहूर है. When we talk about the apples of Kashmir, apples of Kashmir are very famous, particularly अम्बरी वैरायटी जो है. अमरी एक वैरायटी है जो शुपियन में पाई जाती है.
Amri is a type of apple which is found in Shupian. It is Shupian Tahsil, Pulwama district. Okay, Tahsil Shupian and district is Pulwama. It is very famous. And mangoes, guava, bananas, orange, blackberries are grown in plains of Jammu. और जम्मू में जिस तरह आपने देखा कि शुपियन तहसील पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अमरी वैरायटी एक एप्पल की है जो बहुत मशहूर है, इसी तरह जम्मू की जब हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट जम्मू, बिकॉज जम्मू इज़ द पॉर्ट ऑफ J&K, वहाँ पे मैंगोज़ निकलते हैं, गवाज निकलते हैं, बनानाज निकलते हैं, ऑरेंज निकलते हैं, ब्लैकबेरी निकलते हैं। ये जम्मू के प्लेन एरियाज़ में पाए जाते हैं। तकरीबन 10,000 एकर्स में इसकी कल्टीवेशन जम्मू में होती है। कितने? 10,000 एकर्स में इसकी कल्टीवेशन इन चीज़ों किन किन की? मैंगोज, बनानास हैं, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज, इनकी कल्टीवेशन होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लद्दाख, लद्दाख में एप्रिकॉट और वॉलनट्स निकलते हैं। वो तकरीबन 1,000 एकर्स पे वहाँ पे इसकी काश्त की जाती है। In Ladakh, apricots and walnuts are grown over 1,000 acres of land. Okay? और जो फ्रूट्स हैं ये मोस्टली सोल्ड किए जाते हैं आउटसाइड द स्टेट. द फ्रूट्स ऑफ J&K are mostly sold outside the state, and it brings more than 50 crore of rupees annually. यानी ईयरली हमें इससे J&K को, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को 50 करोड़ रुपीस की इनकम आती है. ओके, आर यू गेटिंग मी? तकरीबन एवरेज की हम बात करें, एवरेज एक्सपोर्ट जो फ्रूट्स की होती है, फ्रेश और ड्राई फ्रूट्स की. फ्रूट्स में एक हो गया फ्रेश फ्रूट्स, दूसरा ड्राई खुश्क बादाम वगैरह जो है, ये वॉलनट जो है, ये ड्राई फ्रूट्स में आते हैं. एप्पल्स, एप्रिकॉट वगैरह जो होते हैं फ्रेश फ्रूट्स में आते हैं. तकरीबन 8,343,000 क्विंटल्स हम बेचते हैं. तकरीबन याद रखना, तकरीबन 8,343,000 क्विंटल्स ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट जो है वो बेचे जाते हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन से. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत मशहूर है कश्मीर की, जिस तरह कश्मीर का वाजवान बहुत मशहूर है, इसी तरह ज़ाफ़रान और सफ़रान जिसको कहते हैं, या कुंग जिसको कहते हैं. ज़ाफ़रान भी इसको कहते हैं, सफ़रान भी कहते हैं और कुंग भी कहते हैं, जो पॉम्पर एरिया में उगाया जाता है और किश्तवाड़ और भदरवा में ये उगाया जाता है. जम्मू में, कश्मीर में कहाँ पे? पॉम्पर में. और जम्मू की जब व्हेन वी टॉक अबाउट द कश्मीर, इट इज़ cultivated in Pompar region of the Kashmir, and when we talk about Jammu region, it is cultivated in Bhadrawa and Kishtwar. ठीक है, जम्मू रीजन में, and it is very much famous. ठीक, पोम्पर में तकरीबन 3,000 एकर्स पे इसकी कल्टीवेशन होती है. किसकी? ज़ाफ़रान की. हाँ, तो और इट इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में मशहूर. और इट इज़ ए कैश क्रॉप, हाँ, एंड इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड. ये कैश क्रॉप है और ये ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है. और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द स्टेट. यानी कि अगर हम लीडिंग डिस्ट्रिक्ट को कहेंगे, सबसे आगे जो है सैफरॉन बेचने में, ज़ाफ़रान या कुंग बेचने में, जो स्टेट हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है. दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड fresh fruits we talked about. Now we will see the basic practice of crop production. देखो, जब हमें क्रॉप पैदावार निकालनी है तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. टुडे वी विल रीड अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस. देखो मेरे प्यारे बच्चों, सर्टन कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप यील्ड के लिए. देयर आर सर्टन कंडीशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप यील्ड, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. वो कंडीशंस क्या क्या है? राइट काइंड ऑफ सॉइल. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए. गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, याद रखना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देखो, वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग अबाउट एग्रीकल्चर, एंड हम अपने घरों में भी एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत, हमारे हर घर के पास, हर इंसान के पास हाँ तो ज़मीनें हैं. वी शुड नो
ہاؤ ٹو پروڈیوس دا گڈ yield فرام دا کراپس. ہمیں یہ وی شوڈ بی اویئر اباؤٹ دس فیکٹ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اچھی پروڈکشن اپنے کراپ سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بچے ہو آج تو کل آپ بڑے ہو جاؤ گے اور آپ پہ رسپانسبلٹی آ جائے گی اور آپ کو گھر میں دیکھ بھال کرنی ہے اپنی چیزوں کی, اپنی زمین کی. ہاں, اور یو شوڈ بی اویئر. دیکھو, نالج ایجوکیشن ڈز ناٹ مین ٹو ارن منی. خالی پیسہ نہیں کمانا ہے بس وی ول گیٹ اے گورنمنٹ جاب. نو, اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اچھی زمین ہے, اگر وہ ویل پروڈکشن اسے نکالے گا, ہی کین آلسو مینیج ہز ڈیلی نیڈس فرام دیٹ ویری لینڈ. وہ اس سے بھی اپنے ڈیلی نیڈس کو پورا کر سکتا ہے. یو شوڈ نو دا بیسک پریکٹسز آف کراپ پروڈکشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بنیادی اصول کیا ہے اچھی پروڈکشن کے لیے. بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول جو ہے, سب سے پہلے رائٹ کائنڈ آف سوائل. جو مٹی وہ اچھی ہونی چاہیے, وہ اچھی مینس زرخیز ہونی چاہیے. دوسرا, گڈ کوالٹی سیڈس. ہمارے پاس جو بیج ہو وہ اچھا ہونا چاہیے. تیسرا, ہمیں اچھا اماؤنٹ کس کا ہونا چاہیے؟ واٹر کا ہونا چاہیے, پانی ہونا چاہیے. چوتھی چیز جو ہے امپورٹنٹ جو ہے, ویڈس اور پیسٹس جو ہے ہمیں پراپر میڈیسن استعمال کرنے چاہیے, دوائیاں ادویات استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے زمین میں ویڈس اور پیسٹس گرو نہ کرے. کیونکہ یہ ویڈس اور پیسٹ جو ہے یہ فصلوں کو برباد کرتی ہے. یعنی ٹو کنکلوڈ وی کین سے دیٹ دیر آر 4 امپورٹنٹ اسٹیپس وچ وی ہیو ٹو اڈاپٹ اف یو وانٹ گڈ کراپس. ہمارے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس اچھی زمین ہونی چاہیے, فرٹائل زمین ہونی چاہیے, مست زمین ہونی چاہیے. ہاں, دوسرے ہمارے پاس اچھے بیج ہونے چاہیے. تیسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارے پاس سفیشینٹ واٹر ہونا چاہیے کھیتی باڑی کے لیے. اور جو چوتھا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ویڈس اور پیسٹس جو ہے ہمیں ان کو انٹر ہونے نہیں دینا ہے اپنے کھیتوں میں. اگر ہو بھی جائے تو وی شوڈ پریکٹس دوز اسٹیپس تھرو وچ وی کین کل دا ویڈس اینڈ دا پیسٹس, جس سے ہم ویڈس اور پیسٹس کو ختم کر سکتے ہیں. تو میرے بچوں, دس واز all about today's lesson. Inshallah Rahman, with the grace of Allah, tomorrow we will continue the basic practice of the crop production. اس کی جو رائٹ کائنڈ آف سوائل وہ کیا ہوتی ہے, اور سلیکشن آف رائٹ سیڈس کیا ہوتا ہے, سوئنگ کیا ہوتا ہے, ہاں, اور ہاؤ ٹو ریموو ویڈس اینڈ پیسٹس. وی ول ریڈ آل دس tomorrow. Till then, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.